So this is amino acid part 2. Amino acid part 2. So what we just have concluded is, हमने कंक्लूड ये किया था कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सॉलिड्स हैं, मिसिबल विद वाटर होता है, एंड दे ऑल एग्जिस्ट एज इन द चार्ज फॉर्म एट ऑल पीएच. फॉर एग्जांपल, सपोज हमने क्या किया, एक ग्लाइसिन ले लेते हैं या एलानिन लेते हैं, कोई भी एक ले लिया. सपोज मैंने ग्लाइसिन ले लिया, विच इज सिंपलर वन, एंड सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. और सिंपल मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ इन जनरल, आर सी एच NH2 NH2 और ये COOH है. Let us take its structure at pH 1. तो पहले हमें यदि उसके pH पे हमें डिफाइन करना होगा तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको हमें समझना होगा इन दिस सेंस कि चूंकि एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इट विल आयनाइज. और यदि यह आयनाइज होगा तो कैसे आयनाइज होगा, RCH COO minus NH2 एंड देन प्लस H प्लस. चूंकि यह वीक एसिड है तो एसिड की तरह ये वाला इसने आयनाइज हुआ, एंड दिस इज एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम. एंड नाउ वी कैन अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि इन दिस केस यदि हम देखें, इसमें चर्चा करके और थोड़ा सोच के देखें, सो यू विल फाइंड दिस इज एसिड. ये हमारा एसिड है और NH2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, विच इज बेसिक, एंड देयरफॉर दिस लोन पेयर इज बीइंग डोनेटेड टू हाइड्रोजन. As a result, it would be forming what? It would be forming R CH NH3 plus COO minus. So we can say here this is O minus है और यहाँ पर ये वाला प्लस बन गया. So effectively we can say in neutral water, simple यदि मैं इसमें water की भी बात करूँ तो it would be existing in this particular form, and therefore this is called deuter ion. When I say deuter ion, what exactly this mean to us? इसमें बड़ी confusion होती है क्योंकि इसमें मतलब different लोग different तरीके से इसको define करते हैं, but we can define a very simple way. जो basic definition है हमें उसी को stick करके रखना है. So here we can say deuter ion are the species जिसमें कि negative और positive charge जो हो वो non adjacent atom पे हो. यानी we can say deuter ion is defined as those species in which negative and positive charges are present on non-adjacent atom. Non-adjacent atom पर यदि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसी को हम लोग deuter ion बोलते हैं. So this is existing in deuter ionic form, and in this case the net charge equal to कितना है यहाँ पर. So here we can write here net charge equal to 0. नेट चार्ज हमारा इसमें 0 है. फाइन. एंड नाउ फ्रॉम दिस अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर कि जब एक सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 1 इज दैट कि हमारे पास केस 1. सो व्हेन आई से केस 1, इन दैट केस वी आर टेकिंग लाइक दिस वन. केस 1 में हमने ले लिया इन एसिडिक मीडियम. इन एसिडिक मीडियम, when I say acidic medium, that means H plus is very high, and therefore let us consider pH equals to, let it be 3 or 5, something like that. 3 ले लिया मैंने, ऐसे मान लिया. So when I say pH equal to 3, that means in this solution, here in this solution, concentration of H plus और एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू कितना हो जाएगा ये वाला, दिस इज 10 raised to power minus 3, and so we can say pH equal to 3 आ गया हमारे पास. And now from that, if H plus is this much, then what will happen? Since हमने क्या लिखा है बच्चा यहाँ पर कि this is existing in equilibrium, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है. Again I am writing the same reaction here.
like if I write it in this way, R CH NH2 COOH in equilibrium with R CH NH2 COO minus plus H plus. So when you add more of H plus to this one, this H plus equals to 10 to the power minus 3 यहाँ से हमारे पास आ गया. So what exactly the common ion effect says? Common ion effect ये कहता है कि यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उसमें यदि हम किसी भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है या इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी. यानी यहाँ पर हमने क्या किया कि H प्लस बढ़ा दिया, यानी प्रोडक्ट हमारा बढ़ गया है. प्रोडक्ट बढ़ गया तो रिएक्शन जो होगा दैट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन सो दैट इट विल डिक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिड. तो इस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा. And so the reaction is shifting in backward direction. So we can say this is shifting in backward direction. Reaction will shift in backward direction. Will be shifting in backward direction. Will shift in backward direction. ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग. Will shift in backward direction. Will shift back. जगह नहीं है यहाँ पर, so I'm just making it like that. Will shift back. तो जब ये बैक में चला गया यानी क्या हो गया, यहाँ से ये वाला पहले RCH बना और ये वाला बैक में चला गया. सो मेजर स्पीसीज, जो मेजर स्पीसीज होगा इस पीएच पर वो कौन सा हो जाएगा? मेजर स्पीसीज वुड बी योर RCH COOH एंड NH2. अब थोड़ा रुक, यहाँ पे मैं एक और बात को ध्यान रखना होगा. क्या हमारी बात यहीं पे खत्म हो गई, यही रहेगा, या इसमें अभी और भी H प्लस है? अभी और भी H प्लस है. Therefore this H plus would be further reacting with it. ये H plus further इससे react करेगा, यानी this H plus is further reacting with it to form this NH2 would be taking up this proton, so it would be forming RCH COOH and here this is NH3 plus. ये बन गया. So this one is the major species formed in this particular case, right? So at this pH, we can see here like this is existing in cationic form. So this is the major species formed is the cationic. So this is cationic in nature, cationic, and therefore if potential difference is applied, when potential difference is applied, potential difference is applied, it will move towards, it will move towards negative electrode. ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह इसमें मूवमेंट हमें दिखाई देगी. सो दिस इज एट हायर पीएच कौन सा फॉर्म हमारा स्टेबल होगा? इन दैट केस कैटायनिक फॉर्म इज एग्जिस्टिंग. अगेन दिस इज व्हाट, ये अभी भी हमारे पास का नेट चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर? नेट चार्ज इज +1. नेट चार्ज इक्वल टू +1. सो वी कैन से दिस वन इज चार्ज्ड फॉर्म है ये वाला. दिस स्टिल इज अ चार्ज्ड फॉर्म. चार्ज फॉर्म हमने ये देखा था यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कि न्यूट्रल में भी क्या था, यहाँ पर नेट चार्ज तो 0 था, लेकिन अभी भी ये वाला क्या था, यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव था. बट इन दिस केस यहाँ पर नेट चार्ज +1 है एंड दिस इज ओनली कैटायनिक फॉर्म इज एग्जिस्टिंग हियर. सो लेट्स हैव अ लुक एट इन द केस जब हमारे पास पीएच हमारे पास जब बेसिक सोल्यूशन हो. इन बेसिक सोल्यूशन, in basic solution, when I say solution is basic, in basic solution what will happen? OH minus concentration is larger, or we can say activity of OH minus is higher. ये एक्टिविटी क्या है? दैट इज पार्ट ऑफ आयनिक, और इन जनरल हम लोग डिफिनीशन कहते हैं, जिसमें कि नॉर्मली एक मिस इंटरप्रिटेशन है फैक्ट का, पीएच का या पीओएच का. सो एक्चुअली हमें AOH माइनस का ही यूज करना चाहिए या AH प्लस का यूज करना चाहिए, लेकिन मिस्टेकनली वी फ्रीक्वेंटली यूज H प्लस एंड OH माइनस. दैट विल बी सब्जेक्ट ऑफ अनदर डिस्कशन, दैट हम लोग बाद में अभी जब आयनिक पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, और दैट यू कैन सी इन आयनिक में हम लोग देख सकते हैं उन चीज़ों को.
सो लेट अस हैव अ लुक एट, जस्ट फोकस इस पे हमारा है यहाँ पर, अभी OH माइनस ज्यादा है। सो इमेजिन करते हैं हम लोग एक pH मान लेते हैं, pH इक्वल टू मान लिया हमने हमारे पास है, लेट इट बी कुछ भी लाइक दिस वन pH, या ऐसा सॉल्यूशन ले लेते हैं, pH इज 4 और वी कैन से pH इज 2 या 3 ले लिया, तो pH 3 है, तो pH कितना हो जाएगा, 14 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 11, यानी pH इक्वल टू 11 है हमारे पास। एंड सो नाउ फ्रॉम दिस वन, चूंकि यहाँ पर क्या है, OH माइनस इन एक्सेस, OH माइनस इन एक्सेस में ये प्रेजेंट है, देयरफॉर चूंकि OH माइनस है, so OH minus will consume, OH minus will consume H plus, and therefore to form H2O, to form H2O, and therefore the above reaction जो हमने उसमें dissociation reaction लिखा था न्यूट्रल मीडियम में, उसमें क्या होगा यहाँ पर, जैसे ये वाला COH, ये वाला H plus था यहाँ पर, so we can write it in this way, again we can say like this, कि हमारे पास जैसे हमने ये लिखा है RCH COOH और यहाँ पर ये NH2, now this is existing in RCH COO minus और यहाँ पर ये NH2 है प्लस H प्लस है, so when you add OH minus to this, ये OH minus जो हमने इसमें से add किया है यहाँ पर, so what will happen, this will take this reaction in forward direction, ये वाला reaction को कहाँ ले जाएगा, forward direction में ले जाएगा, this will form H plus and OH minus, so this OH minus is taking up H2O minus H2O हुआ, तो जैसे ही यहाँ पर one of the product is consumed, H plus is consumed, H plus is product formed, product and is consumed, therefore reaction will be driven in forward direction, therefore the reaction would be driven in forward direction, or we can say here in this case reaction would be driven in forward direction, that means the major species क्या जो हो जाएगा हमारे पास, so major species would be like this one, we can say यहाँ पर हमारे पास जो बन जाएगा that would be RCH COO minus and here this is NH2, ये हमारा major form exist करेगा। So again what we can see here, this is anionic form है, ये anionic charged, anionic है, charged है, and this is net charge is 1, therefore it will move toward towards positive electrode when potential difference is applied, So what ultimately we have concluded, or what ultimately we have seen, what we have seen here is now कि at all pH the amino acids are existing in charged form. So conclusion is this कि कोई भी pH हो, न्यूट्रल हो, H प्लस में हो या फिर सिंपल OH माइनस में हो, कहीं भी है, कोई भी pH है, it will always exist in charged form. However, we are not saying in this case कि जो चार्ज है वो कौन सा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, so we that is again matter of discussion, और वो हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि हमारे पास वो जो स्पीसीज है वो कैसा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट दे विल बी एग्जिस्टिंग इन चार्ज फॉर्म ओनली, राइट। तो हम लोग इसी के बारे में और बात करते हैं आगे। सो दिस इज व्हाट द वन थिंग दैट वी हैव कंक्लूडेड हियर, फाइन। सो वी कैन से कंक्लूडिंग इज लाइक दिस कि यहाँ पर जब pH हमारे पास लेस देन 7 है तो कैटायनिक फॉर्म स्टेबल है, ज्यादा फॉर्म मिलेगा। दूसरा, यदि हमारे पास pH 7 है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म है, और जब लेस देन 7 है तो एनायनिक फॉर्म हमारा ये बन गया। नाउ टू ऐड टू दिस फर्दर वी कैन राइट हियर लाइक दिस इज, in this case next term that would be isoelectric point, isoelectric point।
ठीक है. So before this